Good morning everyone, respected director sir, faculty members and fellow students. It is my absolute honor to stand before you today as we come here to address one of the most pressing issues of our time, sexual exploitation and the vulnerabilities that young individuals face in today's fast-paced and interconnected world. As per the directive of GGSIPU, our college has taken the initiative to organize this Nukkad Natak under the theme Na Samajh. This performance is not just a theoretical presentation, it is a powerful message, a call to action and most importantly, a tool for empowerment. Today, we live in an era where the boundaries between the real and virtual world blur more with each passing day. While this interconnectedness has opened up avenues of learning and connection, it has also exposed us to dangers like cyberbullying, human trafficking, online predators, and sexual exploitation. These are not just distant issues, they affect people in our communities, schools, and neighborhoods, often in silence and darkness. Through this Nukkad Natak, we hope to foster understanding and empathy, to break the silence that exploitation thrives on, and to inspire you to step up as informed and responsible members of society. We believe in power of youth to drive change. Your actions, your awareness, and your courage can create ripples that transform life. Together, we can build a community that does not turn a blind eye, but instead becomes a shield against exploitation. So, as you watch today's performance, let it spark reflection and resolve. Let it remind you that we all have a role to play in fostering a safe, respectful, and just world. And now, to bring this vision to life, I would like to call upon the talented students of Abhinay Club to present their impactful Nukkad Natak on the theme Na Samajh. वीडियो बनाने आती है ना? आज हम सब एक नई कविता पढ़ेंगे। चलो इसमें अपनी किताबें निकालो। आओ सुनाऊं एक कहानी। आओ सुनाऊं एक कहानी। नानी माँ की थी जुबानी। नानी माँ की थी जुबानी। कभी पुरानी नहीं कहानी। कभी पुरानी नहीं कहानी। सर पर लाल टोकरी डाली, पर वही सुनहरी लाली। लिए टोकरी काली, चली ठुमक्कर बच्ची बड़ी सयानी। मगर बात से थी अनजान, ये जंगल था भेड़ियों का जंजाल। लंबे लंबे उसके दांत, पंजे उसके तेज तरार। नोच खाए इंसान का मांस, मासूमियत सुनकर काट खड़े थे। दामन के अरमान जगे थे, आंखों में हवस की लाली। सोच उनकी घिनौनी और काली, लेकर भेष सीगा बैठा जिसकी थामे वो उंगली चाली। नाना जी आप घर पर हो? हाँ बेटा, मैं घर पर ही हूँ। नाना जी आपके कान गिर से लंबे क्यों हैं? वो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूं। और ये नाखून ये इतने लंबे क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पकड़ सकूं। आपके दांत ये इतने लंबे क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें काट सकूं। ये तो है ये कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज आई नीड हेल्प, मुझे ले जाइए प्लीज, प्लीज आई नीड हेल्प, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, नहीं प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज, आई नीड हेल्प। माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत खास होते हैं। पापा के राज दुलारे और माँ की हर सांस होते हैं। चिंटू का क्रिकेट खेल चोट खाना या ट्विंकल का साइकिल से गिर जाना लोगों के लिए आम बात, पर माँ बाप के लिए घबराहट का एहसास होता है। सुरक्षित रहे बच्चे हमारे, हम सारा जीवन इसी आस में, पर क्या हम
सुरक्षित है? तो इसी के साथ गिफ्ट की नाट्य संस्था आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है एक स्वलिखित, स्वनिर्देशित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक। ना। समझ? तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरी दुविधा बाबा जी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के कलरिंग किया करती, कुछ कहना था शायद उसको, न जाने किससे डरती थी। बाबा, it's the matter of love। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अभी बता देते हैं प्रॉब्लम। वाह बेटा, क्या कलरिंग की है तुमने? इसके लिए तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता है ना? ये गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट। ये लो बेटा चॉकलेट। दो ना मामा चॉकलेट। लो चॉकलेट। आजा आजा। दो ना मामा। मामा ऐसे हाथ पकड़ो। अरे चला चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे आजा चॉकलेट खाएंगे। चल चल चॉकलेट खाएंगे। चल अरे चल चॉकलेट खाएंगे। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस के कोई फायदा नहीं। अगर ये बात समाज में फैली तो कितनी बदनामी होगी। इसीलिए
ना कहो, कुछ भी ना Oh my God, बाबा, पोक्सू। बचा लो बाबा जी, मुझे बचा लो। शांत रहो, शांत। तुम्हारी इस दुविधा का समाधान है मेरे पास। यह दुविधा तुम्हारी नहीं है, ये दुविधा तो उस बच्ची की है, क्योंकि वो तो नासमझ है और मेरे जमाने के तजुर्बे के हिसाब से उसको यह समझाने वाला कोई उपलब्धि नहीं और ना ही कोई उसे सुनने वाला। तुम चिंता मत करो कम्बो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाबा जी, अगर आप इस भेड़िए को बचा रहे तो मुझ भेड़िए में भी थोड़ी दया करो बाबा जी। तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हें भी बचा लूंगा। पर बाबा जी, आप बचा तो लेंगे, पर वो कोर्ट कचहरी चलेंगे तो? बाबा की शब्द पर शक करता है। लगता है तुझे बाबा की पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं पता। ये देख। एक्सक्यूज बाबा की जय। केस स्टेट वर्सेस बाबा, हाजिर हो। तो देखा वंश, बचाओ लगा तुम जैसे भेड़ियों को। सदियों से चलती आ रही यही रीत है, होती है इन्हीं भेड़ियों की जीत है। फिर चाहे सच से या हो झूठ से, या हो पैसों से या हो ताकत से, होती आई इन्हीं दरिंदों की जीत है। सदियों से यही रीत है, होती आई इन्हीं भेड़ियों की जीत है। भेड़िए हैं हम, भेड़िए हैं हम। जिसका मतलब पर घंटा करीबन 12 केस। 2020 में नेशनल चाइल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन के साइबर लिंक पे 20 मिलियन रिपोर्टें आई थी। उसमें चाइल्ड यौन एवं उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था और इन रिपोर्टों पे हिंदुस्तान काफी ऊपर था। 2011 की बाल जनसंख्या के अनुसार 4,411 लाख बालों के साथ अपराध हुए हैं, जिसमें से केवल 60,000 अपराध ही दर्ज कराए गए हैं। यूनिसेफ के अनुसार 13 नामुन राज्यों में 69 से भी ज्यादा प्रतिशत बच्चों को पारिवारिक स्त्रियों का हनन करते हुए पकड़ा गया है और उनमें से आधे से ज्यादा लड़के हैं। मैं खामोश थी, यहाँ खेलना, वहाँ कूदना, कुछ रहने की आदत थी मुझे, चोट लग के भी ना रोना, ऐसी मैं खामोश थी। एक तू ही तो थी माँ, जो ये खामोशी समझा करती थी, बिना बताए सब कुछ जाना करती थी। प्यार ही लगा था जब अंकल ने गोद में बिठाया था, अच्छी बातें कर मुझको बहलाया था। फिर अचानक उनका छूना पसंद नहीं आया, पर पूरन बन के खड़ी थी। मुझे टूट चुकी थी माँ, मुझे माफ करना, मैं तब भी खामोश थी। और आज जब पूरे 45 मिनट मैं दर्द में कराई, चीखें नहीं सुनी किसी ने, ना बात समझ से आई। फटी शर्ट, सूजे होठ और उनसे बहता खून, मैं वालियत की
Let me appreciate the team who has gone for communicating the things through this Nukkad Natak. And as the head of the institution, it is my responsibility to create awareness among the youth, especially the student of our college, regarding the provisions that are there in place to take care of such type of sexual abuse or sexting or any type of things where our female faculty members or female students feel threatened. You must be aware of the internal complaint committee which is in place as per the rules of the UGC. The basic purpose of internal complaint committee is to accept those types of complaints where you come across these types of problems being faced by the ladies or the girl students. The idea of placing CCTV camera in each of the classroom and in corridors is also mainly because of the student safety, which we have done as per the UGC norms, right? Now, you should know what are the roles and responsibility of the internal complaint committee. The majority of the team members in internal complaint committee are ladies, right? And we also have 2 girl representatives in that particular committee. Now this committee goes in for looking after the complaint if any girl student or any lady goes in for approaching the head of this committee, which is headed by Professor Urvesh Chaudhary in our institution, right? We look into these types of complaints and an internal inquiry as per the rules is set up, where we are also supposed to bring one NGO from outside or a lawyer from outside to look after what has been the problem, and by looking into the things which the victim is telling us and which the other people who are involved into that particular case are telling us, we come to a conclusion, right? Further, all boys and males should be aware of this particular fact that in case you speak anything wrong to a girl in today's scenario, or you speak any foul language which is not acceptable, or you touch a girl without her consent, she can go to the police station, and under section IPC 354-509-496, you can be brought into a big trouble. So as male students and as gentlemen of the institution, be aware of the emerging strong laws which are there to protect the ladies and the girls, and act like a gentleman, use a language which is acceptable in the society. At no point of time, stop talking. At no point of time at the institutional level we are making you learn to speak any abusive language which I come across and sometimes overhear in the corridors. Please mind your language. If you don't know what the rules are coming up, please be aware of those rules. I have told you the rules today here, and we can come to your class and again go in for telling you. The team also has communicated the message very clearly of where people are na samajh. It is not na samjhi of the girls. It is na samjhi of those culprits who does wrong things with the girls and the ladies and are unaware of how the law can reach them to punish them. The first punishment which you may face is 2 years of rigorous imprisonment if you are found guilty, which can be extended to up to 7 years along with a hefty financial fine on you. So be very careful. In the class, under the name of friendship, you cannot do anything now. Is it fine? So please remain within the limit. Speak good language. Be humble. At no point of time you should become vulgar or you should become abusive. We don't promote all this nonsense in the institution. But
it is fearsome to understand that there are some students who speak abusive language, and God knows from where they are learning all these things. It's a warning to all of them. Don't go ahead and don't use any abusive language. Don't be harsh with anyone. You are a gentleman and be a civilized citizen of the Indian society. Our culture has never promoted wrong things against girls and ladies. Ours is a culture who pray Devi. If there are Devtas, there are Devis. Right? And our culture has made us learn how to pray a lady goddess. Saraswati is there. Ma Durga is there. We have seen Ma Kali. Remember, our mythology also respects the female goddess. It is always said, any nation who has to progress first has to learn to respect the ladies. Empower the woman. If you empower the woman, 50% of the population can make a difference in any nation's development. You see European countries, most of the ladies are doing much more better work as compared to males. Right? So my message to males is, don't get distracted during the career formative stages. If you are getting distracted through a mobile phone or through any nonsense which is not required at this point of time, you are wasting a precious time of your life. I hope you understand the message. I am also giving you a message. The team has also given you a message. The message is loud and clear. Let's be humble, let's be polite, and let's be a civilized citizen of the society in which we live. Thank you very much. What an incredible performance we have just witnessed. The students of the Abhinay Club have truly brought the message of Na Samaj to life with their passion, creativity and dedication. Let us give them a huge round of applause for their commendable effort. As we come to the conclusion of today's event, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude. First and foremost, I would like to thank our director sir and faculty members for their unwavering support in organizing this event. Your guidance and encouragement inspire us to take on initiatives like these that drive meaningful change. A big thank you to our Abhinay Club students for their hard work, dedication and for using their talent to create awareness on such a critical issue. To our fellow students, thank you for your active participation and for being such an attentive audience. Lastly, I would like to thank GGSIPU for its initiative and vision in directing institutions like ours to address these pressing social issues. It is through such collaborative efforts that we can build a safer and more informed society. With this, we conclude today's program, but let this not be the end of our journey. Let us all take a pledge to remain vigilant, spread awareness, and support one another in the fight against exploitation and injustice. Together, we can make a difference. Thank you